हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस में से यूनिट नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले वो है रीजन ऑफ अ रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट। तो आज हम रूट का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके जो सेल्स होते हैं उनका भी स्ट्रक्चर देखेंगे। मैं ग्राफिक टैबलेट्स के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाला टॉपिक। तो पहले ये देखिए, ये वाला टॉपिक है हमारा रूट। एक्चुअली ये पूरा का पूरा पोर्शन रूट ही है, और इस वाले रूट पोर्शन में हम स्पेशली रूट के जो रीजन्स है, ये 5 रीजन्स और ये जो रूट का हेयर्स है, इन हेयर्स के बारे में डिटेल में हम स्टडी करने वाले। सो लेट्स टॉक दिस इन डिटेल। सो गाइस, ये एक ट्री है हमारे सामने। हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे। ये एक ट्री है हमारे सामने। हम कभी इमेजिन कर सकते हैं कि ये इतनी बड़ी ट्री, इसके रूट कितने नीचे तक फैले होंगे, और ये इतना बड़ा ट्री हमें कैसे शेडो देता है, कहाँ से शुरुआत होती है इनकी। सो बेसिकली आई विल टेल यू, दिस वन इज द सॉइल लेयर। यस, दिस वन इज सॉइल लेयर। नाउ जस्ट इफ यू पुट द वन सीड इनटू द सॉइल एंड इफ यू गिव अ वाटर टू दिस सीड, then you will get two parts. One part will go top, will be called plumule, and this plumule is going to convert into the shoot system. Yes, and one part will go down, it will be called a radicle, and from the radicle we will get root system. So today we are going to discuss about the root and actually root system, not about the complete root system, but we'll mainly focus on the root. So this is the big tree. Let's begin with a part of a root. Basically we will see different parts of a root, but before explaining different parts of root, I would like to give you branches of a root. So guys, root always have a main branch. It is called main root. लेकिन पहले मैं आपको ये root के branches समझाने से पहले root के type समझाना चाहता हूँ. So basically there are two type of roots. One is tap root, also called true root, and second one is adventitious root. What? Second one is adventitious root. So what is the difference between them? When the roots are produced from radical part of a seed, it is called true root, and when the roots are produced from any part of plant body, any part of plant, but not from radical, then such a root is called adventitious root. When the roots are produced from radical portion of a seed, it is called true root, and when the roots are produced from any other portion of a plant but not from radical, it is called adventitious root. So अब हम सिर्फ tap root के बारे में डिस्कस करेंगे. So this is the diagram of a tap root. This is the diagram of tap root. Basically at the beginning, tap roots are having a main branch. This main branch is always called as a primary roots. Beginning में हमेशा root में primary root होते हैं, और ये primary root कभी भी टूटते नहीं है. These primary roots always be stable. They never undergo break. If primary root undergo break, then plant will fall down. Yes, secondary and tertiary root can undergo breakdown, but primary root never. If primary root get breakdown, then plant will get fall down. Now you just imagine the longest plant, like longest plant of angiosperm, eucalyptus. Plant is 100 feet tall, but their root are also very deeply located in the soil. Just imagine if roots are broken down, then obviously plant will also fall down. So it's a common thing. Are you getting, guys? This is common thing. So important task is that primary root are always stable. Now branches coming out of primary root are always called as a secondary root. They are more delicate as compared to primary, but they are more stronger as compared to tertiary root. And the branches coming out of tertiary root, branches coming from secondary root are called tertiary root. So सबसे पहले branch होगी primary root. Primary root में से जो branches निकलेंगी इनको हम कहेंगे secondary root, और secondary में से जो branches निकलेंगे हम उनको कहेंगे tertiary root. So this is the basic thing about the root. Now we are going to discuss about this lower portion, and this lower portion is basically root, main portion of root. अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले गाइस. So I would like to tell you
In some books it is given that root have a 5 parts, in some book it is given that root have a 4 parts, but basically according to my opinion, what I have a good content, this root has a 5 main part. 4 main parts are this one, like this, but this root cap is also the main portion of the root. So I would say I will discuss 5 parts with you. Yes, so let's begin this 5 part. So first part I am gonna explain you, that will be the root cap. Second part I'll explain you area of a cell division, you can call it region of cell division. Third part area of elongation or region of cell elongation. And fourth we will discuss about area of absorption. Area of absorption. Why we called a area of absorption? Because this is the site from where water is absorbed, because there are root hairs are present. So fourth part will be this, and fifth part I will explain you area of a cell differentiation. This is also known as the area of maturation. Area of differentiation also called area of maturation. So this 5 part I am going to explain you. These 5 parts are also given at the bottom, but first I'll explain you here. Yes, then we will also see the lowermost diagram. Let's begin. What is the root cap, guys? First, root cap is the bottommost portion of the root. It is a triangular. Root cap is nothing but the bottommost portion of the root. It is a triangular in structure. And at the base there is a pointed. What is the advantage of being a pointed? It has a too much advantage. Just because of pointed, it can help in penetrating the layer of a soil. रूट कैप एक ट्रेंगुलर पोर्शन होता है और सबसे निचला हिस्सा होता है रूट का, और नीचे के बेस के पोर्शन ये पॉइंटेड होता है. और पॉइंटेड होने का फायदा ये है कि रूट जितना पॉइंटेड होगा इतना ही सॉइल के अंदर इजीली अंदर जाते जाएगा. सो पॉइंटेड होने का ये फायदा है कि नीचे का उसका जो पॉइंट है वो पॉइंटेड है और इसके लिए रूट इजीली जमीन के अंदर इजीली घुस सकता है. रूट कैप के और भी फायदे हैं. रूट कैप प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम pathogenic infection. What is pathogenic infection? Infection caused due to the bacteria, fungi, viruses, protozoa is called pathogenic infection. So root cap एक प्रकार से रूट के अंदर तरफ पैथोजेनिक इन्फेक्शन से भी बचाता है. अब हम चलते हैं एरिया ऑफ सेल डिवीजन. ये याद रखो, एरिया को ही हमें बेसिकली रीजन भी कहते हैं. एरिया ऑफ सेल डिवीजन ऑल्सो नोन एज एरिया ऑफ cell division also known as a region of cell division. So what is this? Area of cell division also known as a region of cell division. This is the area which is exactly starting 1 mm above the root cap. So 1 mm root cap के 1 mm ऊपर से ये area start हो जाता है. This area, why we called it as the area of cell division? Because there is a meristematic tissues are available. You know guys, in a plant body there is a parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem phloem, like tissues are present, cells are present, but out of all of them only meristematic tissues are having ability of a cell division. Plant में इतने सारे cells होते हैं, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, mesophyll, conducting tissues, xylem phloem, ये सभी cells होते हैं, लेकिन सभी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये एक ही सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है. सो रूट कैप के ऊपर जो एरिया होता है 1 mm स्टार्टिंग से, वो पूरा का पूरा एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ सेल डिवीजन और रीजन ऑफ सेल डिवीजन. बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सेल डिवीजन होता है और नए नए सेल्स प्रोड्यूस होते जाते हैं. अभी जितने भी नए नए सेल्स प्रोड्यूस होंगे, अब आप ये सोचो, this is area, so new cells is produced, new cell is produced, new cell produced, new cell. अब ये जितने भी नए नए सेल्स हैं ये यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, फिर ये नीचे से और नए सेल प्रोड्यूस होंगे, तो ये क्या होंगे, पुराने सेल्स ऊपर जाएंगे और नए सेल्स सभी नीचे आएंगे. सो ऐसे ही करके सभी नए नए सेल्स नीचे आते हैं और पुराने सेल ऊपर जाते हैं, और ऐसे ऐसे करके ऊपर का एरिया तैयार हो जाता है, जिस एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ इलोंगेशन. गॉट इट गाइस? So what is area of elongation?
एरिया इलोंगेशन का मतलब होता है बढ़ना, increase in size. Elongation means to increase in size. So area of elongation or region of elongation is a site which is located above the area of a cell division, and it is responsible for increasing the layer of a cell. As you can see, all these cells are present in the area of elongation. These cells are present in the area of elongation. All these cells are produced by area of cell division, but now they are located in एरिया ऑफ एलोंगेशन. ये जितने भी सेल्स दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी एरिया ऑफ एलोंगेशन में. जितने सेल्स बढ़ते जाएंगे ये एरिया उतना उतना बढ़ते जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेल एलोंगेशन. अप टू हियर दिस विल बी एरिया ऑफ एलोंगेशन, एंड फ्रॉम एरिया ऑफ एलोंगेशन फोर्थ रीजन इज स्टार्टेड. दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन. Yes, we called it as an area of absorption. Why we called it as an area of absorption? Because here water absorbing cells are present. We called root hairs. मैं root hairs के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा. पहले मुझे पांचों पार्ट से एक्सप्लेन करने दीजिए. So root hair are the area, area of absorption or region of absorption is the area where root hairs are present. I would like to tell you guys, this root hairs can be you can say old root hairs can रिप्लेस. गाइस मैं ये डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ, इसके लिए हैंड राइटिंग थोड़ी बराबर नहीं आ रही, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूँ. ओल्ड रूट हेयर्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यू रूट हेयर्स इन 10 to 15 days. After every 10 to 15 days, these old root hairs are replaced and turn into the new root hairs. So this is fourth area. Now this area also help in absorption of sap. What is sap? Sap means water plus mineral. Water plus mineral is called sap, and who is going to absorb this? This is going to absorb this root hairs, and in forward direction it will be carried by the xylem tissue. तो ये रूट का स्ट्रक्चर है. अब हम चलते हैं डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन एरिया के ऊपर. एरिया ऑफ सेल डिफरेंशिएशन और एरिया ऑफ मैच्योरेशन इज द फिफ्थ एरिया वेयर न्यू सेल्स आर एडेड एंड टर्न इनटू द एपिडर्मिस. हमने देखो याद होगा आपको, तो 11th स्टैंडर्ड में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था और उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था. तो एनाटॉमी में हमने ये सब पार्ट्स देखे. दैट आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, देन देयर इज अ यू कैन से एंडोडर्मिस, एंड देन cortex, then pericycle, vascular bundle, and then center pith. तो ये सब जो ऑर्गन होते हैं ना वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? वो सब ऑर्गन है ना एरिया ऑफ मैच्योरेशन पे या तो एरिया ऑफ डिफरेंशिएशन पे फॉर्म होता है. तो फिर से एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए. एट द बिगिनिंग देयर इज अ रूट कैप. यस, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर. So at the beginning there is a root cap area. This is a pointed triangular region which help the plant to get down and stable into the soil. It also protect the root from pathogenic bacteria, pathogenic virus, pathogenic fungi, pathogenic protista, worms, etc. And then area of cell division, where cell division takes place. Then area of elongation means after cell division new cells are increased. They increase as the girth of a root and length of root by cell division area. Then absorption area, where water, mineral or sap is absorbed. An area of differentiation where all these parts are formed. Hope so you understood this clearly. Now this is the root structure. हमने यही पढ़ा अभी. तो ये देखिए यहाँ इस डायग्राम में और क्लियर दिया हुआ है. यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है रूट कैप जो हमने पढ़ा. तो ये वाला एरिया है पूरा का पूरा रूट कैप. ठीक है. उसके बाद ये आता है एरिया ऑफ मेरिस्टेम. तो ये वाला हिस्सा है मेरिस्टेम का. ये यहां तक का एरिया आ जाता है मेरिस्टेम में. और उसके बाद एरिया आता है एरिया ऑफ एलोंगेशन.
So this is root cap, this is मेरिस्टेमेटिक एरिया, दिस इज एरिया ऑफ इलोंगेशन, और उसके बाद ये मैचुरेशन एरिया आ जाता है और यहाँ पे एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन आ जाता है. दिस इज एरिया ऑफ एब्सॉर्प्शन, दिस इज एरिया ऑफ मैचुरेशन, दिस इज एरिया ऑफ इलोंगेशन, दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सॉरी, this one is area of cell division and this one is root cap. So these are 5 parts which I already explained to you. Yes, now coming to the structure of root. अब हम root structure of root hairs के बारे में बात करते हैं. So this is the root hair or you can say single root hair cell. अब ये देख लीजिए, हम इस वाले सेल्स के बारे में डिस्कस करने वाले. Like every cells are the living cells, they are containing nucleus, they are containing cell wall, they are containing cytoplasm, वैक्यूल, राइबोसोम, मेसोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब ये प्लांट सेल है तो इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट, इस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमें सिर्फ डिस्कस करने हैं, बाकी सब हम डिस्कस नहीं करेंगे. जो सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड है वो इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. नाउ दिस इज अ टिपिकल रूट हेयर सेल. नाउ इन दिस रूट हेयर सेल, this long one is basically root hair, but this complete is the root cell. मतलब ये जो पूरा को पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये है पूरा रूट हेयर सेल, और इस सेल में से ये जो पोर्शन है वो है उसका हेयर. ठीक है, वो है हेयर. नाउ दिस इज अ सेल वॉल. नाउ सेल वॉल ऑफ अ रूट हेयर will be made by same kind of a chemical material like other cells are containing, like it must be made by the starch, cellulose, pectin, lignin, and you can say suberin. So these are some chemical material which are present in the cell wall of a root hair. Now there is a presence of a nucleus. Now here nucleus must be containing centrally present of genetic material such as a chromosome and DNA, RNA will be same like that. Now it is also containing cytoplasm. अब आप ये सोचोगे कि ये क्या है इतना बड़ा. ठीक है, तो ये उनका है वैक्यूल. आपने 11th स्टैंडर्ड में सेल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में पढ़ा होगा that vacuole in a plant are 2 to 3 in number and they are large and permanent, but vacuole in animal are many in number, they are small and temporary. तो एनिमल के अंदर वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं और वो टेम्पररी होते हैं, लेकिन नंबर उनका काफी ज्यादा होता है. लेकिन प्लांट के अंदर वैक्यूल के नंबर सिर्फ 2 से 3 ही होते हैं, लेकिन वो परमानेंट होते हैं हमेशा और उनकी साइज काफी बड़ी होती है. सो दिस इज द वैक्यूल इन द प्लांट. आई टेल यू व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ वैक्यूल. यस, इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर storage of sap. Yes, mainly इसका function होगा storage of sap, but it will also store protein, vitamin, alkaloid, minerals, etc., etc. And this will be the cytoplasm of the you can say root hair cell. This will be the cell membrane of root hair cell. Now this is the total soil. ये जितना भी पूरा एरिया है वो पूरा soil का एरिया है. नेक्स्ट वाले डायग्राम में मैं आपको इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि सोइल के एरिया में रूट कैसे एब्सॉर्ब करते हैं. एंड दिस इज वैक्यूल. जैसे ही वाटर और मिनरल, जैसे ही वाटर प्लस मिनरल अंदर आएंगे वो डायरेक्टली वैक्यूल के अंदर जाएंगे और ऐसे ही वो आगे की तरफ बढ़ सकते हैं. सो आई शो यू दिस. अ रूट हेयर सेल हैज एन एक्सटेंशन. तो हमने क्या डिस्कस किया, देखो ये था न्यूक्लियस, ये था वैक्यूल, मतलब ये पूरा वैक्यूल ही है. ठीक है, दिस वन इज कंप्लीट vacuole. We have already discussed in last diagram. This one is nucleus, this one is cell wall, and this is the cell membrane. Here you can see root hair, and this is the yellow color portion is cytoplasm. तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया. अब ये देखिए आप, now this is the soil particle. Yes, this one is the soil particle. Now inside the soil particle this root is came, and from this root you can absorb the from this root water can be easily absorbed like that. ये रूट तो सिर्फ एक ही बताया, यहाँ पे भी हो सकते हैं. आपको याद होगा तो मैंने इस चैप्टर में आपको ये भी पढ़ाया हुआ है, सोर्सेस ऑफ रूट. सो देयर वाज अ 5 टाइप ऑफ वाटर लाइक हाइग्रोस्कोपिक वाटर, combined water, bound water, gravitational water, but main important water was what? Which type of water was important? Capillary water. So capillary water कहाँ पे पाया जाता है? Just imagine
this is the soil particle, this one is 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 soil particle. तो ये जो रूट हेयर्स हैं वो रूट हेयर बेसिकली यहाँ से अंदर तक आते हैं, यस, और यहाँ से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं. सो वाटर प्रेजेंट हेयर इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर. सो दिस रूट कैन एब्सॉर्ब द वाटर एंड देन ट्रांसफर इनटू द vacuole, and this water transfer directly into the center of the cell. So likewise it will go to the topmost portion. So these are important things about the root. एक डायग्राम मुझे और आपको एक्सप्लेन करनी थी लाइक रूट में. So no, I have explained to all the diagrams in the root. So guys, this topic was a very small portion related to the structure of a root and their typical parts of root. मैं फिर से एक बार आपको पांचों के पांचों पार्ट समझा बताने की कोशिश करता हूँ. एक बार देखिए स्ट्रक्चर ऑफ रूट में. रूट कैप इज द लोअर मोस्ट ट्रेंगुलर पोर्शन. रूट कैप इज द लोअर मोस्ट ट्रेंगुलर पोर्शन ऑफ द रूट which protect the root from pathogenic infection like a bacteria, virus, protozoa, fungi, worms, and it also help the root to get deep into the soil for the fixation of a plant body. प्लांट ऊपर कितना हाइट में कितना है ये मैटर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये मैटर करता है कि वो ज़मीन में कितना है. अब आप सोचिए इतने बड़े बड़े पीपल के पेड़ होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, वो इतने बड़े बड़े पेड़ कैसे स्टेबल होते हैं? जस्ट बिकॉज उनके रूट इतने डिटेल में जमीन के अंदर है तभी तो ना. ठीक है. और उसके बाद रीजन आ जाता है, रीजन ऑफ सेल डिवीजन. दिस इज द एरिया वेयर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस. दिस इज द रूट कैप एंड दिस इज द एरिया वेयर सेल division takes place, and then there is a area of elongation where cells are added only, yes, and then area of absorption where root hairs are present. और हमने root hair का structure भी अभी डिटेल में देख लिया. and then this is a maturation area which forms parts of anatomy. मतलब प्लांट की जो एनाटोमी है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर टिश्यू, पिथ, ये सारे ऑर्गन ये बनाने का काम इनका है. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इट वाज बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ अ रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ रूट इन डिटेल. थैंक यू सो मच. इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है लिखावट, ये डायग्राम सब, अगर आपको ये पूरी PDF फाइल चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पे 9028179848 पे. मैं आपको ये पूरी की पूरी PDF फाइल सेंड कर दूंगा. मैं इसे सेव कर लेता हूँ सो दैट आई कैन सेंड यू. आई शुड सेव इट इन अ PDF फाइल. Okay guys, so thank you so much for watching this video. Please share this video with your friends as much as you can, and if you are new to our channel, please do subscribe to our channel and press the bell icon. Thanks. Have a good day.